अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पढ़े एजुकेशन 301 के जीडीपी रिलेटेड क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन आया था जी, इसकी लास्ट डेट है 18 और क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में है व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द कोर्स जनरल मेथड ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ दिस कोर्स। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा ये गया कि आप लोग ने इस सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ा या इस कोर्स में आपने क्या इल्म हासिल किया और आपके नज़दीक मेरिट्स और डीमेरिट्स इस कोर्स के क्या हैं। अब ये कोर्स जो था ये था टीचिंग के बारे में। तो हम लोगों ने जब बात की, शुरुआत में आप लोग लिखेंगे जी, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई लर्न फ्रॉम दिस कोर्स इज दैट a teaching method comprises the principle and method used by teacher to enable student learning. These strategies are determined partially on subject matter to be taught and partially by the nature of the learner. Full stop. According to my opinion, क्योंकि आपसे पूछा गया ना तो आप कहेंगे according to my opinion, teaching refers to those activities which are designed mainly to bring behavioral changes in student in a desired manner. A good teaching requires skills, techniques, and effective teaching strategies. Teacher. It occurred to me. अब बहसियत उस्ताद, आप उस्ताद को क्या लेते हैं तो आप कहेंगे टीचर. इट occurred to me lay the foundation of knowledge in all topics. For example, students should not pursue writing if they had never learned how to construct sentence, nor would they strive to be doctor if they had never learned about the 2 मिनट ये हो गया आगे पीछे. they had never had the opportunity to discover an interest in science classes, comma, nor would they aspire to politician if they had never learned about the importance of government in social studies classes. The profession of teaching is woven into the fabric of society. अच्छा, कुछ यहाँ तक लिख लें, कुछ थोड़ा सा आगे लिख लें जी. कुछ बच्चे यहाँ तक भी लिख सकते हैं ताकि आपकी चेंजेस आ जाएं पूरे. मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ ताकि आप लोग आराम से कर सकें. इफ़ वी टॉक अबाउट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ दिस कोर्स, देन वी डिस्कस सम पॉइंट अबाउट टीचिंग बिलो विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. अब मेरिट्स बेसिकली होते क्या हैं, हेडिंग देंगे टीचर डोंट हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स. You will not even have to work long hours as a teacher. You will most likely just work 40 hours per week. However, some teachers work much less. Sure, you will have to work longer in the beginning because you will need to learn how to professionally prepare for your classes. Therefore, with time, you will no longer require as much as preparation, resulting in significant reduction in your productive working hours. Furthermore, यहाँ तक आप लिख देते हैं काफ़ी है. You can improve your people skills. ये आपकी हेडिंग आ गई. आप इस पे लिख सकते हैं you will be able to effectively strengthen your people skills as a teacher because you will working with the variety of students throughout the year. You will acquire a solid feel of how they act and how they try to deceive you. Furthermore, you will soon be able to pinpoint whether someone is lying to you or stating the truth. Those abilities will be useful not only in your professional life as a teacher but also in your personal life. Enough. एक दो लाइन मजीद जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, बट यहाँ तक इनफ हो सकता है. यू कैन टीच मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स. पॉइंट्स को आगे पीछे कर दीजिएगा ताकि आप आसानी से कर सकें. You will teach, you will to have a multitude of freedom when it comes to the subject you teach. Simply pick your favorite subject and succeed at them. As a result, you will able to teach these subjects for extended amount of time. And you will finally know what you need to understand at work without having to organize your literature, your lecture. अच्छा, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने मेरिट्स की बात की. अब हम आगे चलते हैं जी डीमेरिट्स की तरफ. Limited promotion option. Being a teacher, you may also have a limited prospect of advancement. You will frequently work in the same position for several years, if not decades.
which can be disappointing because you will know that your endeavor will not pay off in the long run, but while many others in a cooperative sector will be able to quickly climb the professional ladder. You will be trapped in the in the same position for a long time and not may not receive any promotional offer at all during your teaching career. Working as a teacher can be emotionally or mentally taxing. Your profession as a teacher can be mentally hard depending on the circumstances you want to teach. अब क्या इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? अच्छा गाइस, यहाँ पर आप एग्जाम्पल को हेडिंग में दे सकते हैं, यानी बोल्ड कर सकते हैं. If you would like to teach math at the high school level, you will need to have a strong grasp of numbers, which not everyone possesses. As a result, make sure you carefully select the thing you would like to teach so you don't run into any problem. You will have, अच्छा आप दो लिख चुके हैं, enough. अब अगर आप थर्ड लिखना चाहते हैं तो लिख लें, you have to teach the same lesson over and over. हम लोगों ने देखा था EDU 301 में कि टीचिंग को बोर बनाने के लिए एक बेसिक चीज़ ये भी होती है कि टीचर बोर हो जाती है बाय गिविंग या बाय टीचिंग अ सेम लेसन ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. Another disadvantage of teaching is that you will be required to teach the same material repeatedly and over again. The longer you have been teaching, you have been a teacher, the more you will remember all you have to teach by heart. Won't need to be prepared for it. 5 disadvantages. अब मैं अगर बात कर रही हूँ कि disadvantages की, तो ये तो advantages होगा, but it may also get monotonous, यानी कि एक बोरियत आ जाती है, एक ठहराव आ गया आपके अंदर. पेमेंट भी काफ़ी रिलेटिवली लो होती है, सैलरी जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, बट इट डज नॉट एक्सीड द एवरेज पे फॉर अदर की ऑक्यूपेशन. The diversion and hard work that teachers put in both within and outside the classroom are not reflected in their remuneration. Okay, अब यहाँ तक तो आप अगर लिख सकते हैं तो फाइन. अब कुछ बच्चे मज़ीद अगर डिफरेंट करना चाहते हैं तो वो ये वाला पार्ट लिख लें इस वीडियो का, यानी कि here we see some common merits and demerits of teaching being a teacher merit. Demerits of course are, अब क्या मेरिट्स हो सकते हैं जी? मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, हेल्प योर स्टूडेंट डेवलप, लर्न एंड हैव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर जनरेशन, बी अ रोल मॉडल, embrace balanced lifestyle, have variety in your career, join the school community, share your passion, enjoy the reward, financial and incentive. ये लिखते हैं काफ़ी हो जाएगा. टीचर डू नॉट, अच्छा इसके बाद जी हमारे पास टीचर सेंटर्ड आ गया. अब टीचर सेंटर्ड क्या चीज़ है? द टीचिंग मेथड इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ सेज ऑन द स्टेज. किस तरह रेफर किया जाता है? एज अ सेज ऑन द स्टेज. इन द टीचर सेंटर्ड मेथड द टीचर्स सर्व एज एन अथॉरिटी फॉर देयर स्टूडेंट. On the other hand, students tend to receive their knowledge passively by listening to literature, lectures, and teachers' direction. The end goal of this method of teaching is for students to get good results through testing and assessment. Basically, हमने define किया teacher centered चीज़ क्या. अब हम इसके advantages देखेंगे और फिर disadvantages भी साथ देख लेंगे. Logical arrangement आपको देख लेते हैं जी. Education content, development of cooperation, focus on the subject. Disadvantages आ गए, यानी कि demerits आ गए. ओके गाइस, यहाँ पे आप merits भी दे सकते हैं हेडिंग में और demerits भी दे सकते हैं. Limited content, full dependency of student on teachers, summative assessment. Student centered. In this teaching method, both teacher and learner become a part of the process in more or less equal way. The teacher's main role is coaching and facilitating student learning, as well as making sure that students understand the material. Additionally, they are supposed to evaluate students by assessing them formally or informally. यहाँ तक लिखें तो भी काफ़ी है कि दो पार्ट्स आपके बन जाते हैं. जो एक लिखता है इट इज़ एन एक्सीलेंट थिंग, अदरवाइज वेल एंड गुड. एक लिखते हैं, दो लिखते हैं, आपसे बेसिकली किसी एक चीज़ के बारे में नहीं कहा गया. एडवांटेजेस हम देख लेते हैं. Formative evolution, student being actively involved in the learning process, emphasis on the meaningfulness of the knowledge being passed.
आगे बढ़ने से पहले काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डिसएडवांटेजेस इसका क्या होगा जी? स्पेशल टीचर्स के रिक्वायर्ड, इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स इफ फोकस ऑन स्टूडेंट पर्सनल डिमांड। तो ये था जी। अच्छा, आपको जिनको नहीं पोस्ट मैसेज का पता भी किस तरह करते हैं जीडीबी को अटेम्प्ट, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। आपको यहाँ पे एक मिलता है कि क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास आता है पोस्ट मैसेज का ऑप्शन, शो माय कमेंट्स या शो माय मैसेज नहीं, पोस्ट मैसेज को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इसके अंदर आप लिखना शुरू कर देंगे। फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज होते हैं, बेसिकली आप डिफ़ॉल्ट रखें, नहीं तो एरियल होता है बेस्ट। साइज़ आप इसका 12 रखेंगे, हर चीज़ आपके पास 12 में आ जाती है शुरुआत में। आप फिर उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें, बाकी किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। हेडिंग के लिए आप बोल्ड करते हैं किसी, अब बोल्ड कैसे होता है देखें। फ़र्ज़ करते हैं कि हम इस लाइन को करते हैं बोल्ड, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो गई। ये देखें ये बोल्ड हो गई, इस तरह इन्हें बोल्ड किया जाता है। अगर इसी लाइन को हम अंडरलाइन करके लिखते हैं, जो मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि ना लिखें, क्योंकि इस तरह वो लोग उन लोगों खुद से कह देते हैं कि इट इज़ अ चीटिंग मटीरियल, सो इस तरह ना करें। बट अगर आप हेडिंग सारी देना चाहते हैं तो फिर सारों के नीचे लाइंस लगाएं, तो यूँ ये अंडरलाइन पे आ जाता है। इसके बाद ही आप जब ये कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आप करते हैं पोस्ट मैसेज। जैसे ही आप पोस्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज खुद ब खुद सेंड हो जाएगा, यूँ आपकी जीडीपी सबमिट हो जाएगी। होप सो आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।